Okay, we're live now. Assalamu alaikum, everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the stream of today with something. Alright. Okay. Oh, yeah. Okay. You might be thinking, what's blood up to? Blood is up to nothing. Oh, yeah. Whatever. Whatever that means. Wheel of names. Go wheel of names. We will have two of the things to the complete the task or make new tasks. I'm gonna do it for 7 1 2 3 4 5 6 7 and spin the wheel. Let's see what we have today. Complete the yesterday's task. Okay, that's real. Okay, and I completed yesterday's task, and now we're gonna go gamble again. We're gonna do BFD or either taxation. Early for 1 3 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright, let's go. Okay, today we are starting off with taxation. Let's go, guys. So, as the wheel of name has decided, we're gonna start off with taxation. So I'm gonna open up this bit and where is we have to do summer 25 question number 3. That is summer 25 question number 3. I don't know what's inside that question, but we'll figure it out. Yeah, we'll do is figure it out, huh? Okay, I'm gonna go summer 25 question number 3. Summer 25 is over here. And question number 3. Okay, it's some apparel brand or some shit. I don't know what it is, but you have to figure it out somehow, whatever it is. Complete the question. Hopefully, yeah. Hopefully. Hi. Let's read. First of all, we start with the requirement. Yeah, requirements. So I think I'm pretty audible. Okay. What are the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules? Provide comments on each element. Comments on each element. Okay. Can I highlight it, bro? Please. Hello. Hello. Please highlight. IUI. Okay. Of the above computation of total and taxable income, along with the explanatory notes prepared by the tax manager for the tax year 2025, provide suggestions wherever necessary. Comments and suggestions. Alright, 80 marks for this. I don't know what Blood's on, but he's on something. Alright. What would be your response in part number A? If the group does not opt to be taxed as one fiscal unit. Group does not opt to be taxed as one fiscal unit. Okay, it's talking about group taxation. I have some idea of it. I've no idea about completely. I have no idea what it is totally about. Whatever, man. Okay. So just fill our ears with the noise. We're gonna start the question later.
enough of your bullshit, man. Let's move on to the question. For this question, assume today is 30th of September, and yeah, that's pretty cool. Okay, whatever that means. Zerb Apparels Limited (ZAL) is an unlisted public company, not listed. So I'm gonna open up TPP in just in case. I don't know. Just in case I decide to offer this shit, but I don't know. Just this thing. I think I know something, but I don't know if it's the thing I'm thinking or if it's something else. Okay, whatever. Let's move on. Engage in the business of manufacturing, importing, and distributing apparels, including luxury handbands, coats, scarves, gloves across Pakistan. On 1st July 2024, there will be the beginning of the tax year. Yeah, ZAL acquired 100% ownership of Aba Beal Textiles Private Limited (ATPL). Companies specialized in providing contract-based stitching and embroidery services to direct exporters with confirmed orders as well as to other sellers in the local market. However, ZAL already holds 80% shareholding and in Nassar Fabric Limited. Okay, it is getting confusing and real. I don't know. Let me check. Blue. Look at this. First of all, we have ZAL. Then we have this other company, ATPL, and then we have NFL. Sorry about that. This owns 100%. This owns 80%. And this is unlisted public company. And private company. And this is another public company, unlisted public. Okay, that's pretty cool. Alright. ZAL tax department in the process of finalizing the group tax return. Group tax return. Okay, group tax return. No, galat button, wrong button. Beta, don't do it. Beta for the tax year 2025. The tax manager has compiled the following data along with the explanatory notes for the management's review and approval for the financial for the year ended 30 June 2025. Okay, ZAL and a group of companies computation of the total and taxable income for the tax year 2025. Okay, ZAL, then we have ATPL, then we have NFL, and then we have consolidated ship. Income from business, sales to direct exporters. It's from ATPL and consolidated and 00 and okay, fine. Sales to other than direct exporters, see explanatory note number 1. Fine, that later. Okay, 1400, 63, 650. 1400. I think they just added this and this becomes this. Okay, then we have both of them added. 7 plus 3 is 10, 4 plus 6 is 10, 11, 1 and 1, 2, yeah, 4 to 110. Just added this shit and there comes this. Then we have expenses, see explanatory note number 2. 1082, 230, 480, and then there are this consolidated. Okay, fine. Income from the other sources. Gain on disposal of office premises, the explanatory note number 3. They have a gain, ATPL has a gain, private company. And then we have a total taxable income, that is 3. And then we have a loss here, we have income here, and then we have losses have been adjusted. That's pretty cool. Tax on taxable income at 29%. Then we have here
Then we have explanatory notes. Remember, the question is 18 marks and 6 marks for this, so it's pretty heavy portion of the question. I'm 100 out of 100, about 24 marks that are being questioned over here. So let's see what can cook and what can cook. Okay, anyone in chat? There's no one in chat. Well, that's fine, that's all right. So we have this here. If I go to main contents and then go income tax and then go what am I looking for? I'm looking for group taxation. There will be somewhere here. Where is it, bro? Group taxation and group relief. Okay, group taxation. Okay, I'm just gonna read it out. Nothing serious, just reading it out. Okay. Holding companies and subsidiary companies of 100% owned group may opt to be taxed as one fiscal unit. Holding company and subsidiary company Okay, that's pretty fucked. Sorry about the language, my fault. Okay. Holding companies and subsidiary companies of 100% owned group may opt to be taxed as one fiscal unit. In such cases, besides consolidated group accounts as required under the Companies Act 2017 of the whatever, in such cases, besides consolidated group accounts, computation of income and tax payable shall be made for the tax purposes. The companies, I'm gonna read it again. What fuck is just going on over here, man? Okay, holding companies and subsidiary companies of 100% owned group may opt to be taxed as one fiscal unit. In such cases, besides consolidated group accounts as required, computation of income and tax payable shall be made for the tax purposes. Okay, the companies in the group shall be give an irrevocable option for taxation under this section as well with one fiscal unit. The group taxation shall be restricted to the companies locally incorporated under the Companies Act. Are these locally incorporated? Yes, and yes. Then we have the next one is the relief under group taxation would not be available to losses prior to the formation of the group. The option of group taxation shall be available to those group companies which comply with such corporate governance requirements and group designation rules and regulations as may be specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time, and are designated as companies entitled to avail group taxation. What the fuck is this saying, man? It's saying the group of okay. Sorry everybody for my fucking lack of fucking sorry about the language again. Is anyone in chat? No one's chat, that's cool. The group taxation. Oh sorry. Let me read that again. The option of group taxation shall be available to those group companies which comply with such corporate governance requirements and group designation and rules or regulations as may be specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time, and are designated as companies entitled to avail group taxation. Group taxation may be regulated through rules as may be made by the board. So there's a nothing burger over here, so we're gonna move on. Okay, so seeing this, there's a problem. Okay, these two can be group taxed. I think so. Okay, because this owns this 100%, so yeah, they're eligible for group taxation. And this does not own shit in this, so oh no, sorry, this one and oh yeah, this no, sorry, this one and sorry, where NFL. Okay, did I write wrong over there too? No, better not.
ZAL already holds 80%. Nissan Fabric. Okay. Okay. Sorry. Some things are not right over here. This is like this. Okay. ZAL is 100% owning this and 80% owning this. So by reading this line, the companies of don't read, holding companies and subsidiary companies of 100% owned group may be opt to tax as one fiscal unit. So these are not eligible to be group taxed. As far as I can understand, I might be wrong. I might be totally off the grid, but that's fine. That's totally fine. Okay, guys, that's totally fine. We're here to fucking learn. Okay, not make the right assessments. I don't know. Maybe we are. I don't know. You know better. Shut the fuck up. Okay, whatever. Okay. ZAL sales include. Okay. First of all, we have export sales. Then we have sales other than direct exporters. Explanatory note number 1. Explanatory note number 1 says ZAL sales include 18.8 million for the sale of 40 rolls of premium silk fabric to Bright Fashions. Who's Bright Fashions? I don't know. Price is 47,000 per roll. 40 rolls, and yeah, okay. The fabric was purchased from NFL. Who's NFL? Oh, it's our fucking subsidiary. Oh my god, that's cool. NFL at 415 per roll. ZAL incurred freight and transport charges of 3,000 per roll and received a quality discount of 1,000 per roll. Okay, these are subsidiaries and holding and subsidiary giving discounts to each other and whatever, so resulting in a total net purchase of cost of 16.68 million. ZAL typically purchases similar fabric from Rahat Fabric Limited, okay, which does not offer quality discounts. ZAL sells such fabric at a standard gross profit margin of 20% on sales. So we have to comment on the above things that they have done. So there's so much going on, man. Okay, let me try to professionally judge this thing. Okay, we have what we're doing. I'm doing point number one. Okay, we have ZAL, and we have point number 1. We have sales other than direct exporters. Sales to other than direct exporters. Okay. ZAL purchased some it from unlisted public company, another unlisted public company that is subsidiary. I purchased some fabric. What did I purchase? We purchased some silk fabric, premium silk fabric. The commodity under is premium silk fabric. Okay, the commodity under the thing that is being discussed, and yeah, fine. Okay, number 3 else. Okay. Sorry about that. Yeah, sorry about every fucking thing. Okay, the sales amount involved is 18.8 million. How did we come up with that number? Well, it's actually 40 rolls at the rate of 47,470, or yeah, that. Or we can add the 3 zeros, 1 to 3, divided by 2, 3, 4, 5, 6, and then it's 18.8, and we can go formula. Why am I dragging this so long? I don't know.
I don't know mine. I don't know because I don't know anything. I'm just trying to dig deep into these things so that I know what could have been possible over here that they did not do rightly. I'm gonna change this filter to noise suppression to suppress all the noise. Suppress all the noise. Suppress all the noise. Suppress the noise. Suppress the noise. Suppress the noise. Okay, that seems to have suppressed the noise. Maybe suppress the noise. I don't know. Everything is suppressing the noise. Okay, let's add this compressor. Let's add. What happened over here? What happened? Hello. Yo. So is my voice clear now? I don't know. I'm adding shit to it. Hopefully it makes sense. I don't know. Okay, whatever. So this line is done. Okay, it's included in sales. We don't care. And the other thing that is saying is they purchased from the subsidiary at the rate of 4,500 per roll, 3,100 per roll. So that will make it. Oh, sorry. If I go there, I type it for 7 at 415 per roll. Okay. ZDL also incurred freight and transport charges of 3,000 per roll and received a quality discount of 1,000 per roll. We also incurred some 3,000 per roll. Okay, 120k for what? For transportation charges. This is the okay. Let me try to phrase it real quick. Let me put it over here. We have cost to ZAL, we have transport and freight. So yeah, then I received a quality discount of 1,000 per roll, resulting in total net purchase of 16.68. How does that make 16.68? Okay. We have discount per roll. How much discount? 1,000 per roll. We have this too. So if we sum with this, sorry. Okay, this, that's 15.76. But this one is in minus 15.68. Alright, that makes sense. So what else? ZDL typically purchases similar fabric from Rahat Fabric Limited and discount from NFL. And if we purchase the same shit from another supplier, that is, what is the name of the supplier? Rahat Fabric Limited. NFL. Cost would be at the rate of transportation would be there. Cost would be the same. There would be no discounts. So the only thing is problem is the discount. So should the discount between the parent and subsidiary be allowed in taxation? That's the real question here. He's asking the real question here, guys. And answer to the question is absolutely not. Absolutely fucking not. Offers no discount. Sorry, no discount for you, brother.
and no discount. Okay, so the cost would be 16.72 if it purchased from Rahat Fabric Limited, and if it's sold for 20%, standard gross profit margin of 20% on sales. Okay, it's sold for 18.8, and if we do 80%, that will be your cost. 15.4 it would be your cost. For our cost is 16.72, and they're including the fucking transport charges, hopefully. Meow, 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 meow. Okay, now we'll rise the fucking concept. Fucking we're gonna add 1, 2, 3, 4, 5. Sale as reported. Sale that should have been reported. The cost should be now gross profit is 20% of this. And now the margins, how the margin versus sale percentage of sale price. Okay, this is the margin. I'll subtract this. There will be cost. Cost would be this. Why am I beating the bush around? I don't have a clue. Maybe something else. I don't know. I don't actually know. I don't know actually know. Okay, let's start the formula for it. Man, I'm so confused right now. We have cost, we have gross profit, we have sale price. Okay. We know the cost that should have been, that is this one. And we have a gross profit is actually, we don't know this price, sale price, we don't know this. This is actually 20% of X. This is, so this will be 80%. This is gonna be 16.72 plus X into 20% equals to X. So if I take it there, 8% divided by 18, okay. You have to do it like divided by 18. Sale that should have been. Now, requirement was to comment on the fucking thing and provide suggestions for evidence. Will cost this.
am I doing? I don't know. I don't have no clue. Sale that is reported. That is a one. I don't know. Okay, so the thing is that in group taxation, you need to reverse the sales, if I remember correctly. And the way you do it is I don't know. So I'm lost. I'm really okay. Someone in the chat. Let's chat. Let's chat up, man. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Okay. That's enough thinking, I think, on this shit. Maybe, I don't know. I'm not sure. One thing I'm sure is that the discounts will be reversed, first of all. And that's it. That's all I know. Okay. Next of all, we can go to the expenses, do some discussion on it, and then move forward. Okay. Expenses. See explanatory note number 2. Explanatory note number 2 is this, and expenses are summed up like equally, probably. I may sum it up so it doesn't bother me later. 1082, okay, 1082, 230, 480. Sum it up like this. Oh yeah, this summed it up like 100%. So yeah, okay. So they're saying ZAL expenses include the following amounts related to development of an innovative temperature regulating cost and gloves. Sorry. Of an innovative temperature regulating code and gloves. Why is done feasibility studies on initial prototype development before the approval of the board? Feasibility studied and initial prototype development. This would be expensed out July to October 2024. Renovation of upper floor of head office 60% allocated to the research and development department and 40% to marketing and branding department. I don't know. Renovation of the upper head office expenditure. Okay. Renovation is capital expenditure and it will be added in the cost of the building, hopefully. Or no, or no. Most of the things I don't fucking know, bro. What is going on over here, man? Am I smart or am I not? I don't know. Is it me or is it something else? Okay. Research and development department and 40% market. I don't know what is going on over here. Purchase of textile simulation machine. Might be allowed depreciation, depreciable assets, salaries and engineering laboratories. I don't know. You have a comment. Okay, comment. If it's on the development, we'll capitalize, and if it is cost incurred to obtain patent for the innovation development during the project, 4 million. Board formally approved the product development on 1st November. Okay, July, August, September, October is gonna be expensive. And salaries will be whatever. I don't flipping know. Okay. How do I look? Chat
Chat, do you know chat? Chat does not know chat. Okay. Yeah, number two, that is number two. Number two is sorry, expenses include. Okay. For me, approved product development on 1st November. Product. Okay, feasibility studies of initial prototype development approved by the board. This will be expensed out. Feasibility studies. Can we go up, brother? Thank you very much. 5 million expensed out. What else? Now this shit I'm not sure about. I think it's gonna be capitalized. So not capitalized in the thing, but in the capitalized in the cost of building. How much is it? 17 million. Doesn't matter if it is allocated to research and development department or 40% to marketing and brand department. It doesn't matter. It's just gonna go in the cost. Might be wrong, but I'll take the shots. I didn't give a shit. Okay, purchase of textile simulation machine. Depreciation on the machine capitalized in cost of product because it's in January, and salaries um 14 million. I don't know how much operation rate on machine. Go and check real quick. Schedules. Depreciation. %15. 9%. Okay. Where is it? Where is it, man? Oh my god, it's so confusing.
If we go down, then we'll have no. Where's the amortization, brother? I think it's in the thing. Sorry. Question number 24. Years maybe, I don't know. Okay, that's my verdict on that shit. Okay, we have then disposal of office premises. The gain represents the difference between fair market value and written down value of the office premises. On March 1st, APTPL sold the premises to Zerdale. Okay. Who's Zerdale? Zerdale. Who sold who? ATPL to Zerdale. 100%. Okay. The time of sale, premises had a WTV of 25 million and the fair market value was 33 million. Zerdale continues to use the premises for its operation. The premises were originally acquired through a bank loan of 50 million by ATPL, of which 60% remains outstanding. Holy shit, man, that's a lot of shit that is going on over there. We're gonna know it's number 2. So they should hire a tax consultant at this point, not me though. Gain on disposal. Okay. On a chat, no, it's chat. One's in the chat. That's fine. Fair market value under known value. There is no depreciation in the year of disposal. Okay.
ये वही नहीं है ना यार, consideration received. Okay, he thinks we know shit, so we're gonna figure something out. Consideration received अगर नहीं है तो free में दी है तो okay guys, I've fucking officially given up on the question. Sign in the chat. So anyone who has an idea how to solve this question, let me know. Let me know. Okay, while doing the question, I've come across a couple of things that I didn't do, and I don't know if I'm able to do them, but it's fine. At least I'm fucking trying to do them. Okay. Okay, fine. Alright. So, I'll do this one. So what if I made it when it was already when it was to come on the bus? Oh, what if I made it when it was Bismillah Rahman Rahim. I hope you're all well. Hey yo, it's AI, man. Oh my god. Okay, there's a question. 40 minutes for a question, bro. Like, come on, bro. It couldn't be that. Bismillah Rahman Rahim. I hope you're all well. In today's lecture, we'll discuss question number 3 from the CFE 5 Summer 2025 attempt. Okay. Question number 3 from the Summer 2025 attempt is a theoretical question from the area of income tax. Okay. It's a theoretical question. Alright.
If you look at the question papers or the examination pattern of the previous 810 CFE5 attempts, we'll generally find one or two questions from the income tax area in the income tax competition. These typically test us on company taxation, group taxation, or similar areas. We have a lot of information, and we have to calculate the company's total income, taxable income, and tax liability. If you look at these last 8 settlements, you'll see a question in the area of income tax where we're given a performed tax computation. Some additional information is provided. We have to identify errors in that tax computation and explain the correct tax treatment. So, this question number 3, which we're covering for summer 2025, is a similar question. In this, we're given a performed tax computation. Some additional information is provided, and we have to identify errors in this tax computation, etc., to determine what's correct and what's wrong, and then determine the correct tax payment. Secondly, this question relates to the topic of group taxation. I think I've been teaching this subject in CF5 since around 2015 or 2016. And as much as I've taught the previous 181 batches of IGES C5 so far, we cover the area of group taxation and group relief. So, we cover group taxation theoretically. We cover group tax relief theoretically, and the computational questions we solve are based on group relief. No scenario-based question or computational question related to group taxation has ever been asked in the exam before today. But, if you've properly covered the lectures, you might have noticed that during the lectures, I had you do a ग्रुप टैक्सेशन का भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक कंप्यूटेशनल सवाल करवाया था, और मैं तकरीबन मेरा ख्याल है कि पिछली जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हर अटेम्प्ट में कहता हूँ कि यार ग्रुप टैक्सेशन ग्रुप रिलीफ तो पास पेपर में पूछा गया है कंप्यूटेशनल के सवाल में, लेकिन ग्रुप टैक्सेशन के ऊपर कभी सवाल नहीं आया। तो एग्जामिनर चाहे तो वो ग्रुप टैक्सेशन के ऊपर भी एक छोटी सी केस स्टडी, एक सिनेरियो बेस्ड सवाल या कोई कंप्यूटेशन का सवाल बनाकर पूछ सकता है। और हम क्लासेस के साथ जो है ग्रुप टैक्सेशन का एक बेसिक सा न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं कि अगर 2 कंपनी की ग्रुप टैक्सेशन हो रही है तो ग्रुप टैक्सेशन में किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होंगी, सेपरेट टैक्सेशन में किसी चीज़ें किस तरह से वर्कआउट होगी। तो फाइनली ये समर 2025 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ग्रुप टैक्सेशन के ऊपर एक सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछा गया, एक कंप्यूटेशनल बेस्ड सवाल पूछा गया, और एक हैवी वेटेज का सवाल है। 24 मार्क की वेटेज, 24 मार्क की वेटेज सवाल की, जिसके अंदर ग्रुप टैक्सेशन का एरिया टेस्ट किया गया और साथ साथ इनकम टैक्स का कुछ एडिशनल डिफरेंट जगहों से चीज़ें पूछी गई हैं। तो सवाल के रिक्वायरमेंट में हमारे पास 2 हिस्से हैं। पार्ट ए की वेटेज 18 मार्क्स की है, पार्ट बी की वेटेज 6 मार्क्स की है। इन टोटालिटी ये 24 मार्क का सवाल है। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, प्रोवाइड कमेंट्स ऑन ईच ऑफ द अबव on each element of the above computation of total income and taxable income along with explanatory notes provided by the tax manager for the tax year 2025 या जो भी हमारा करंट टैक्स ईयर है, and provide suggestions wherever necessary। तो एक तो हमें इसमें टैक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करके दी हुई है, जिसके हमें हर एलिमेंट के ऊपर कमेंट प्रोवाइड करने, कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, उसके बारे में भी हम ट्रीटमेंट वगैरह बताएंगे और सजेशन देंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था। पार्ट बी में कहता है कि व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स इन पार्ट ए इफ द ग्रुप डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स एज वन फिस्कल यूनिट। अगर ये ग्रुप एज अ सिंगल फिस्कल यूनिट टैक्स ना हो, यानी कि ग्रुप टैक्सेशन की तरफ ना जाए, तो फिर टैक्सेशन किस तरह से होगी, क्या कमेंट्री होगी, ये हमें प्रोवाइड करनी है। हमें स्पेसिफिकली कहता है कि रिवाइज कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा से कैलकुलेशन, दोबारा से कंप्यूटेशन वगैरह नहीं बनानी, जो कंप्यूटेशन हुई हुई है उसी पे हमें अपने कमेंट्स प्रोवाइड करना है। एंड इग्नोर WWF, WPPF, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स एंड सुपर टैक्स इफ एनी, और ये सारी चीजें हम इग्नोर कर देंगे। ऑलराइट, अब सवाल को देखते हैं। कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 सितंबर 2025। इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। ZERP Apparels Limited is an unlisted public company engaged in the business of manufacturing, importing and distributing apparels, including luxury handbags, coats, scarves, gloves across Pakistan। हमारे पास एक कंपनी है ZERP Apparel कंपनी, ZAL के नाम से, जो कि एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, इंपोर्ट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। अपैरल, ये मेरे ख्याल है कि लेडीज आइटम है, जो कि जिसमें ये हैंडबैग्स, कोट्स, स्कार्फ्स वगैरह कवर्ड है, ग्लव्स वगैरह। ऑन 1 जुलाई 2024, अच्छा ये सवाल हम, इस सवाल में जो है टैक्स ईयर 2025 के हवाले से बात की गई है, और कहता है 1 जुलाई 2024 यानी कि साल के पहले दिन, ZL acquired 100% ownership of Ababil Textile Private Limited, a company specialized in providing contract-based stitching and embroidery services to the direct exporter with confirmed orders as well as to other sellers in the local market. Moreover, ZL already hold 80% shareholding in
नसर फैब्रिक लिमिटेड। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। साल के पहले दिन इसने 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की एक प्राइवेट कंपनी की। ये प्राइवेट कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर को। तो इसकी टैक्सेशन हमने पढ़ी है कि अगर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज, अगर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए किसी एक्सपोर्ट हाउस को या एक्सपोर्टर को, तो इस केस में टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज पे जब एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट हाउस पेमेंट करेगा तो वो 1% का टैक्स डिडक्ट करेगा, और वो जो 1% का टैक्स डिडक्ट होगा वो हमारे लिए मिनिमम टैक्स होगा। Okay, 1% का टैक्स I know that shit, bro. I know. I should have said it, man. I should have said it. में टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज पे जब एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट आउट पेमेंट करेगा तो वो 1% का टैक्स डिडक्ट करेगा वैल्यू एडेड सर्विस को। तो इसकी टैक्सेशन हमने पढ़ी है कि अगर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज, अगर टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए किसी एक्सपोर्ट हाउस को। Okay. Textile and mineral rectangle. को या एक्सपोर्टर को, तो इस केस में टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज पे जब एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट आउट पेमेंट करेगा तो वो 1% का टैक्स डिडक्ट करेगा, और वो जो 1% का टैक्स डिडक्ट होगा वो हमारे लिए मिनिमम टैक्स होगा। ये हमने मिनिमम टैक्स रिजीम के एरिया में सेक्शन 153 का सबसेक्शन 2 कवर किया था, जिसके अंदर प्रोविजन ऑफ टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर की टैक्सेशन में हमने मिनिमम टैक्स रिजीम के एरिया में कवर किया था। अच्छा, इसके अलावा इस पेरेंट कंपनी के पास एक और नसर फैब्रिक लिमिटेड की भी 80% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ZDL tax department is in the process of finalizing the group return for the tax year 2025. The tax manager has compiled the following data along with explanatory notes for the management review and approval for the year ended 30 जून 2025. कंपनी के टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ग्रुप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है टैक्स ईयर 2025 के लिए, और टैक्स मैनेजर ने हमें डाटा वगैरह कंपाइल करके दिया टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैनेजमेंट के रिव्यू और अप्रूवल के लिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को रीड करने से पहले अगर मैं ग्रुप टैक्सेशन के प्रोविजंस को थोड़ा सा रिकैप करूं, तो ग्रुप टैक्सेशन के प्रोविजंस में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो भी लोकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई लोकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का होली ओन ग्रुप हो, यानी कि 100% ओन ग्रुप हो, यानी पेरेंट के पास सब्सिडीज की शेयर होल्डिंग 100% हो, तो वो ग्रुप एज अ सिंगल फिस्कल यूनिट टैक्सेशन के लिए ऑप्ट कर सकता है। और फिर वहां पर एडिशनल फॉर्मेलिटीज है कि आपको ग्रुप के सेपरेट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और ग्रुप टैक्सेशन का ऑप्शन फाइल करना पड़ेगा, और ग्रुप टैक्सेशन में हम एज अ सिंगल फिस्कल यूनिट टैक्सेशन करवा रहे होंगे, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स वगैरह को मीट करना होगा। ये सारी बातें हमने ग्रुप टैक्सेशन के एरिया में डिस्कस की है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का आई गेस का सेक्शन 50 समथिंग था, हाँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 59 डबल है। सेक्शन 59 डबल ए में हमारे पास ग्रुप टैक्सेशन के हवाले से सारे मामला लिखे हुए हैं कि कंपनी से 2017 के तहत कंपनीज हों और होल्डिंग और सब्सिडी ऑफ 100% होली ओन ग्रुप हो, जो कि अपनी सिंगल फिस्कल यूनिट के तौर पे टैक्सेशन करवा रहे होंगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बन रहे होंगे, इररिवोकेबल ऑप्शन फाइल करना पड़ेगा, लोकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के तहत,
और ग्रुप रिलीफ में प्रायर ईयर लॉसेस एडजस्ट नहीं होंगे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स वगैरह की कंप्लाइंस वगैरह की जाएगी। ये बातें हमने ग्रुप टैक्सेशन के एरिया में पढ़ी है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे ये समझ आ गई सवाल के इस पैरा को देखते हुए कि पेरेंट के पास अबाबील टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयर होल्डिंग है, तो इन दोनों में तो ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है। लेकिन ये जो नसर फैब्रिक लिमिटेड है इसके सिर्फ 80% शेयर होल्डिंग है, तो इसका मतलब है कि नसर फैब्रिक लिमिटेड को मिलाकर ग्रुप टैक्सेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रुप टैक्सेशन के लिए 100% शेयर होल्डिंग का होना जरूरी है। यहाँ पर चूंकि सिर्फ 80% शेयर होल्डिंग है तो नसर पे हम ग्रुप टैक्सेशन अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जैप और ये जो ATPL है, जैप नहीं सॉरी जैल जरप अपैरल्स और अबाबील टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों पे ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है। एनीवे, अगर हम कंप्यूटेशन को देखें तो हमारे पास तीनों कंपनीज और तीनों कंपनीज के बाद हमारे पास एक कंसोलिडेटेड यानी कि टोटल का कॉलम आ रहा है। सेल टू डायरेक्ट एक्सपोर्टर में ATPL ने 147 की सेल्स की है। फिर सेल्स टू अदर देन डायरेक्ट एक्सपोर्टर में हमारे पास तीनों कंपनीज की कुछ सेल्स आ रही है जो कि अदर देन डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स यानी कि नॉर्मल कस्टमर्स वगैरह को सेल की है, तो तीनों की टोटल सेल्स आ गई, ये कंसोलिडेटेड टोटल सेल्स। फिर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हर किसी के साथ सी एक्सप्लेनेटरी नोट 1, सी एक्सप्लेनेटरी नोट 2 इनकम देखेंगे। फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस आ गया। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, ATPL के पास 8 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस है। एक्सप्लेनेटरी नोट नंबर 3 में कुछ लिखा होगा। और फिर हमारे पास टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 29% पे ग्रुप का 138 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, एक एरर तो मैं फेस पे ही आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वो ये कि ये जो अबाबील टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये जो टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, तो जो भी टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर को, जिसकी ये 147 मिलियन का रेवेन्यू आ रहा है, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स होगा। यहाँ पर इन्होंने 29% से टैक्स तो कैलकुलेट कर लिया है इस नेट इनकम के ऊपर, लेकिन ये मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स होगा 1% की इस एक्सपोर्टर की सेल्स के ऊपर। 1% की जो हमने एक्सपोर्टर्स को टेक्सटाइल वैल्यूडेड सर्विसेज प्रोवाइड की, इस पे 1% की विदहोल्डिंग होगी और 1% का जो टैक्स है वो मिनिमम टैक्स रिजीम का टैक्स है। तो एक गलती तो हमें फेस पे ही आइडेंटिफाई हो गई। दूसरी गलती ये आइडेंटिफाई हो गई कि ये NFL को ग्रुप टैक्सेशन के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि NFL में हमारी शेयर होल्डिंग 80% है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स में। कहता है पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 पर्टेन करता है सेल से पर्टेनिंग, ये जो तीनों के सेल्स के नंबर आ रहे हैं। कहता है जेल हमारी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है। जेल सेल्स इंक्लूड 18.8 मिलियन फ्रॉम द सेल ऑफ 40 rolls of premium silk fabric to Bright Fashions, price at 470 per roll. The fabric was purchased from NFL at 4,15,000 per roll. ZL incurred freight and transportation charges of 3,000 per roll and received a quantity discount of 1,000 per roll, resulting in a total net purchase cost of 16.68 million. ZL typically purchases similar fabric from Rahat Fabric Limited, which does not offer quantity discount. ZL sells such fabric at a standard gross profit margin of 20% on sales. इस पॉइंट को दोबारा से रीड करने की जरूरत है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। पेरेंट कंपनी ने, जेल ने, इसने 18.8 मिलियन की सेल्स की है, कोई 40 रोल्स ऑफ प्रीमियम सिल्क सेल किए किसी कस्टमर को 4,70,000 पर रोल की प्राइस पे। तो 4,70,000 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 40 करें, ठीक है, सेलिंग प्राइस चार्ज की गई है 4,70,000 और नंबर ऑफ रोल सेल किए गए 40, तो टोटल सेल्स कितनी है 18.8 मिलियन। तो पेरेंट कंपनी ने 18.8 मिलियन की सेल्स की है किसी कस्टमर को, 40 प्रीमियम रोल सेल किए 4,70,000 के हिसाब से। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ना, ये NFL से यानी कि अपनी सब्सिडी से एक्वायर किया गया, किस प्राइस पे 4,15,000 की प्राइस पे। तो यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है सर, हमारे पास कॉस्ट है 4,15,000 की। तो 4,15,000 into 40, 16.6 मिलियन की हमारे पास कॉस्ट है। कहता है फैब्रिक वाज परचेज फ्रॉम सब्सिडी एट 4,15,000। जेल इनकर्ड फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 3,000। अच्छा, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन पे 3,000 का खर्चा हुआ और साथ साथ हमें एक क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है 1,000 पर रोल का। यानी कि हमारे पास जो बेसिकली कॉस्ट है ना, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि परचेज प्राइस फ्रॉम NFL वो है 4,15,000, फिर अदर कॉस्ट कौन सी सर, जो फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन लगा 3,000 और हमें एक क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है कितना 1,000 का। तो 4,15,000 का ये रोल हमने सब्सिडी से परचेज किया, 3 लाख की हमारी फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और 1,000 रुपए पर रोल हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिला। तो टोटल नेट परचेज आ गया 16.68 मिलियन। तो ये ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा कि हमारे पास कॉस्ट पर रोल कैलकुलेट हो जाएगा इन तीनों का सम, और फिर जब हम टोटल परचेज कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे तो 417 into 40 तो 16.68 मिलियन। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है रिजल्टिंग इन नेट परचेजेस ऑफ 16.68 मिलियन। जेल टिपिकली परचेजेस सिमिलर फैब्रिक फ्रॉम राहत फैब्रिक लिमिटेड।
which does not offer quantity discount। कह रहे आम हालात में हम ये फैब्रिक जो है ना किसी राहत फैब्रिक लिमिटेड से परचेज करते थे जो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता। और जेल ये जो फैब्रिक सेल करता था ना, ये जो जेल फैब्रिक सेल करता है ना, ये 20% सेल्स पे करता है, यानी 20% सेल्स मार्जिन पे करता है। यानी कि जब ये राहत से परचेज करता होगा तो सेल्स प्राइस का 20% मार्जिन चार्ज करता होगा, बाकी जो है उसकी कॉस्ट हुआ करती थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये बेसिकली एक ऐसे एरिया से टच की गई है जो जनरली आपको कोर्स के अंदर कवर नहीं करवाई जाती। मैं अपने रेगुलर कोर्स के अंदर ये चीज कवर नहीं करवा रहा हूँ और मैं ये बात क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है ना अभी। ठीक है, हमने क्या कहते हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के वाले से सेक्शन कवर किया, मेरे ख्याल से सेक्शन 79 या सेक्शन 78 शायद। और एक हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है, जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है तो वो आर्म लेंथ बेसिस होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम टैक्सेशन की पूरी स्कीम में समझते हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं कवर किया जाता, कॉस्ट जानबूझकर ज्यादा चार्ज की जाती है प्रॉफिट अंडरस्टेट करने के लिए, ऑब्वियसली टैक्स वाले को नहीं मान रहा होगा। अभी मैं स्पेसिफिक सेक्शन भी नहीं आ रहा, जनरल कॉमन सेंस की बेसिस पे बात कर रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी के दरमियान आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो फिर अकॉर्डिंगली टैक्स वाला जो है वो इनकम को रिकम्प्यूट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्यूरेट इनकम। अब इस प्रोविजन में चूंकि ये पैरेंट कंपनी है, ये सब्सिडी कंपनी है, ये अपनी सब्सिडी से 4,15,000 रुपए का रोल खरीद रहा है, 3,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लग रही है और 1,000 रुपए क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रूल्स में आते हैं, इनकम टैक्स रूल्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के वाले से एक कंप्लीट रूल्स दिए हैं। इनकम टैक्स रूल्स में ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैप्टर 6 मिलेगा जो कि पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग पे है। अब चूंकि ये चीज एक दफा एग्जाम में आ गई है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स इतने ज्यादा पेजेस पे नहीं, 109 पेज हुए, 112 पे कंप्लीट हो गए, इन रूल्स को एक दफा रीड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक कंट्रोल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो रिलेटेड पार्टी के दरमियान हो रही है, कंट्रोल ट्रांजैक्शन में आर्म लेंथ प्राइस किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, इसके दो तीन मेथड्स बताए हैं। हम रिटेल प्राइस मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जहां पर ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे कंडक्ट ना की जाए, इस सिनेरियो में मार्केट प्राइस या आर्म लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए एक डिफरेंट मैं मेथड बताए हैं। इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना किसी भी ट्रांजैक्शन की आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। और इस सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर बेसिकली रीसेल प्राइस मेथड के तहत इस पैरेंट और सब्सिडी की सेल्स, जो सब्सिडी ने पैरेंट को सेल्स की उसकी आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट की जाएगी। किस तरीके से देखो, जेल ने मार्केट में सेल किया 4,70,000 का रोल। अगर हम जेल के पर्सपेक्टिव से देखें, फ्रॉम जेल पर्सपेक्टिव, तो सेलिंग प्राइस पर रोल कितनी है, 4,70,000। ठीक है, आम हालात में जब ये राहत से खरीद कर ये फैब्रिक बेचते थे तो 20% मार्जिन कमाते थे, 20% मार्जिन कमाते थे, यानी कि मार्जिन कितना होता था, 20%। हाँ तो अगर मैं चूंकि मार्जिन है तो सेल्स प्राइस पे ही डायरेक्ट मार्जिन लगा देंगे, तो 94,000 आया, यानी कि कॉस्ट पर रोल कितनी होती थी, फिर कॉस्ट पर रोल होती थी 470 माइनस 94, 470 माइनस 94, 376 की कॉस्ट पर रोल होती थी। सही है। अब यहाँ पर जो है हमारी कुछ ये कॉस्ट लगती है, कुछ क्या कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह मिला है, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता, तो लेस अदर कॉस्ट लेस क्वांटिटी डिस्काउंट। लेकिन 3,000 की कॉस्ट आपकी वैसी लगती है और यहाँ पर आपको 1,000 का एक एडिशनल डिस्काउंट मिला है, तो इसको भी अगर हम कंसीडर कर लें क्योंकि हम यहाँ से क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, तो भी हमारी जो मैक्सिमम कॉस्ट होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए, 372। लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जेल एनएफएल से चीज खरीद रहा है 4,15,000 रुपए की, जेल एनएफएल से चीज खरीद रहा है 4,15,000 रुपए की। आम आदमी 4,70,000 का बेचता है 20% मार्जिन पे, 20% मार्जिन पे बेचने का मतलब है कि जेल को इसकी कॉस्ट मार्केट से कितनी की पड़ती थी, 376 की, यानी कि जब ये रात से खरीदते होंगे इसको कॉस्ट कितनी पड़ती होगी, 376 की। अच्छा, इस कॉस्ट के अंदर फ्रेट चार्जेस वगैरह लगते होंगे तो हमने उनको एडजस्ट भी कर दिया, तो भी ये कितनी की कॉस्ट होती है, 372, जबकि सब्सिडी से कितने का खरीदा जा रहा है, 4,15,000 के हिसाब से। इसका मतलब है कॉस्ट ओवरचार्ज्ड बाय एनएफएल। एनएफएल ने कितनी कॉस्ट ओवरचार्ज की है, 4,70,000 माइनस 372। हर एक रोल पे तकरीबन 45,000 की कॉस्ट ओवरचार्ज की गई। अब हर एक रोल पे अगर 45,000 की कॉस्ट ओवरचार्ज की गई है, यानी कि जेल का प्रॉफिट पर रोल 45,000 से अंडर शेड हुआ है। अगर मैं कोई चीज की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट अंडर डिक्लेयर हुआ है ना, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट
ओवर चार्ज वो कितना होगा 40,000 45,000 मल्टीप्लाई 40 रोज 1.8 मिलियन। यानी कि टैक्सेबल इनकम ऑफ जेल टू बी इंक्रीज बाय 1.8 मिलियन। तो 1.8 मिलियन के करीब तकरीबन जो है जेल की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिसेंटली एक चीज जो मार्केट से 3,72,000 की बढ़ती है वो जानबूझकर सब्सिडी से 4,15,000 की खरीद रहा है, तो अपना प्रॉफिट इतने से अंडरस्टेट कर रहा है, टैक्सेबल इनकम अंडरस्टेट कर रहा है। ये सारी बातें सोल्यूशन के अंदर लिखी हुई जब हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में ये सारी बातें करनी, और ऑब्वियसली यहां जो हमने गलतियां आइडेंटिफाई की वो तो हम बात करेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2 हमारे पास एक्सपेंसेस से सब्सिडी से 4,15,000 की खरीद रहा है, तो अपना प्रॉफिट इतने से अंडरस्टेट कर रहा है, टैक्सेबल इनकम अंडरस्टेट कर रहा है। ये सारी बातें सोल्यूशन के अंदर लिखी हुई जब हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में ये सारी बातें करनी, और ऑब्वियसली यहां जो हमने गलतियां आइडेंटिफाई की वो तो हम बात करेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2 हमारे पास एक्सपेंसेस से पढ़ेंगे, लिखा है एक्सप्लेनेटरी नोट नंबर 2 कहता है जेल एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेंपरेचर रेगुलेटिंग कोट एंड ग्लव्स। हमने इनोवेटिव टेंपरेचर रेगुलेटिंग कोट और ग्लव्स डेवलप किए और 49 मिलियन के ये सारे खर्चे हमने इस 1082 के अंदर एक्सपेंस आउट कर दिए, इस 1082 के अंदर एक्सपेंस आउट कर दिए। अब ये क्या-क्या खर्चा है? फिजिबिलिटी स्टडीज एंड इनिशियल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड 3 मिलियन। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हमने ये फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह खर्चा किया 5 मिलियन का प्रोटोटाइप वगैरह के डेवलपमेंट पे। सर अगर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन को प्रॉपर्ली कवर किया है तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एक सेक्शन कवर किया था प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर का, और प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में था कि प्रोटोटाइप को डेवलप करने की फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और जो भी प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे आप एक साथ एक्सपेंस के तौर पे नहीं करते बल्कि 20% पे अमोर्टाइज करते हो। तो ये 5 मिलियन का खर्चा एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, ये 20% पे अमोर्टाइज होगा। कमिटमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे आप एक साथ एक्सपेंस के तौर पे नहीं करते बल्कि 20% पे अमोर्टाइज करते हो। तो ये 5 मिलियन का खर्चा एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, ये 20% पे अमोर्टाइज होगा। देन रेनोवेशन ऑफ द अपर फ्लोर ऑफ हेड ऑफिस 60% एलोकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड 40% ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग डिपार्टमेंट। सर हमने फ्लोर की रेनोवेशन करवाई है, 60% रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट किया, 40% मार्केटिंग ब्रांडिंग डिपार्टमेंट को एलोकेट किया। टैक्स लॉ में हम इस तरह की बात नहीं करते, बेसिकली हमने फ्लोर का रेनोवेशन के लिए खर्चा किया तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और बेसिकली अल्टीमेटली फ्लोर की रेनोवेशन हो रही है यानी कि बिल्डिंग के तौर पे एसेट कैपिटलाइज होगा। तो टैक्स लॉ में हम बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट करते हैं, तो ये 17 मिलियन के एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए बल्कि हर साल 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट होना चाहिए। फिर परचेज ऑफ टेक्सटाइल सिमुलेशन मशीन 14 मिलियन ने मशीन परचेज की। अगेन मशीन भी एक डेप्रिशिएबल एसेट है, एक साथ इसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट मशीन है तो पहले साल 25% का इनिशियल अलाउंस और पहले साल और आने वाले सालों में 15% का डेप्रिशिएबल एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट होना चाहिए था। फिर परचेज ऑफ टेक्सटाइल सिमुलेशन मशीन 14 मिलियन ने मशीन परचेज की। अगेन मशीन भी एक डेप्रिशिएबल एसेट है, एक साथ इसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट मशीन है तो पहले साल 25% का इनिशियल अलाउंस और पहले साल और आने वाले सालों में 15% का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। सैलरीज ऑफ इंजीनियर एंड लैबोरेटरी कंज्यूमेबल्स ये तो चले सही एक्सपेंस आउट किया, सैलरी एक्सपेंस है। और कॉस्ट इनकम टू ऑब्टेन अ पेटेंट फॉर द इनोवेशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट 4 मिलियन हमने एक पेटेंट खरीदा है, तो पेटेंट टैक्स लॉ में इंटेंजिबल है जिसको हम अमोर्टाइज करते हैं। इंटेंजिबल की लाइफ मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ मालूम ना हो तो फिर हम इसे 15 साल की लाइफ में अमोर्टाइज करते हैं। तो एक एक्सपेंस के बारे में जो बातें आपसे वर्बली डिस्कस की यही सारी बातें आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर आ रही होगी। द बोर्ड फॉर्मली अप्रूव द प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन 1 नवंबर 2024। ये वैसे हम बताया इसको कैसे इतना काम है नहीं, तो एक एक पॉइंट के ऊपर हम अपनी कमेंट प्रोवाइड कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है? द गेन रिप्रेजेंट्स। पॉइंट नंबर 3 किसका था? सर एटीपीएल के पास 8 मिलियन का गेन आ रहा है डिस्पोजल ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस पे, और इसी के आगे लिखा था सी नोट नंबर 3 कहता है गेन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द डब्ल्यूडीवी ऑफ द ऑफिस प्रीमिसेस ऑन 1 मार्च 2025। एटीपीएल सोल्ड द प्रीमिसेस टू जेल एट द टाइम ऑफ सेल द प्रीमिसेस हैड अ डब्ल्यूडीवी ऑफ 25 मिलियन एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 23 मिलियन। सर ये जो गेन आ रहा है ये फेयर मार्केट वैल्यू और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस है, तो 33 माइनस 25 8 का गेन और 8 का गेन हमने ऊपर पीनल में देखा। ये प्रीमिसेस एटीपीएल ने जेल को सेल किया, सब्सिडी ने पेरेंट को सेल किया। जेल कंटिन्यू टू यूज द प्रीमिसेस फॉर इट्स ऑपरेशन। द प्रीमिसेस वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर बैंक लोन ऑफ 50 मिलियन बाय एटीपीएल ऑफ व्हिच 60% रिमेंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा सब्सिडी ने ये जो प्रीमिसेस एक्वायर की ना 50 मिलियन के लोन से एक्वायर की थी, और इस 50 मिलियन के लोन का 60% अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यहां पर हमने टैक्स लॉ में सेक्शन कवर किया था डिस्पोजल ऑफ एसेट बिटवीन होली ओन्ड कंपनीज, जो सेक्शन रेफरेंस याद नहीं आ रहा, शायद 97 के आसपास का था। यस सेक्शन 97 ही है, डिस्पोजल ऑफ एसेट बिटवीन होली ओन्ड कंपनीज। अगर ये सेक्शन आपने प्रॉपर्ली कवर किया तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर होली ओन्ड कंपनीज के दरमियान एसेट डिस्पोजल हो तो फिर यहां पर नॉन रिकग्निशन रूल अप्लाई होता है, यहां पर कोई गेन लॉस वर्कआउट नहीं होता। ट्रांसफर के बाद जो डब्ल्यूडीवी
आ रही है वही ट्रांसफर के पास डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, लेकिन इसकी कुछ शर्त वगैरह थी कि दोनों कंपनीज होली ओन ग्रुप का पार्ट हो, ट्रांसफर की इनकम उस साल में एग्जाम फ्रॉम टैक्स ना हो, जो ट्रांसफर के पास डब्ल्यूडीवी थी वही ट्रांसफर के पास डब्ल्यूडीवी होगी, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि 8 मिलियन का गेन रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, 8 मिलियन का गेन रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, और ये जो पैरेंट है, पैरेंट ने जब इसको एक्वायर किया तो पैरेंट इसे 25 की डब्ल्यूडीवी रिकॉर्ड करेगा, और 25 की डब्ल्यूडीवी का जो भी हर साल 10% के साथ डेप्रिसिएशन बनेगा वो अकॉर्डिंगली क्लेम किया जाएगा। अच्छा, और एक और बात वहाँ पे ये थी, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ये सेक्शन कि बहुत कंपनीज होली ओन ग्रुप से परटेन करती हो, ट्रांसफर जो है एसेट से परटेनिंग लायबिलिटी भी एक्वायर करेगा, ट्रांसफर जो है एसेट से परटेनिंग लायबिलिटी भी एक्वायर करेगा, यानी कि सब्सिडी ने एसेट लोन लेकर हासिल किया था जिसका 60% अभी आउटस्टैंडिंग है, तो अब ये लोन भी पैरेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिमेनिंग लोन पैरेंट ही सेटल करेगा, और लायबिलिटी की जो कॉस्ट है वैसे की डब्ल्यूडीवी से एक्सीड ना करती हो। जहां अगर हम 50 का 60% देखें तो 50 का 60% 30 मिलियन आ रहा है, जबकि इसकी डब्ल्यूडीवी बल्कि वर्डिंग क्या थी, द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट मस्ट नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हां ठीक है, एसेट की कॉस्ट एक्सीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यूडीवी दी हुई है, लायबिलिटी 50 है तो 50 का 30% अगर आप सॉरी 50 का 60% करेंगे तो ये 30 आएगा, यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं दी हुई, ये 25 का डब्ल्यूडीवी दी हुई है, तो ये वाला पॉइंट हम ऐसे चेक नहीं कर सकते, और ट्रांसफर की जो इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो इस वाले में इंडिकेशन है नहीं कि जेल की इनकम एग्जाम वगैरह हो, तो सेक्शन 97 का हवाला देते हुए हम ये लिख देंगे कोई गेन लॉस वगैरह अराइज नहीं होगा। ये सारी बातें मैं 18 मार्क्स के लिए करनी है, 18 मार्क्स के लिए सवाल में जितनी बातें मैंने डिस्कस की मेरे ख्याल है कि कम से कम 18 पॉइंट्स तो निकाल ही सकते हैं। फिर कहता है आपका आंसर क्या होता अगर ग्रुप टैक्सेशन ना होती, सर ग्रुप टैक्सेशन ना होती तो हम तीनों कंपनी की सेपरेट, देखिए इस कंपनी की तो वैसे ही सेपरेट टैक्सेशन होनी है एनएफएल की, ग्रुप टैक्सेशन ना होती तो इन दोनों की सेपरेट टैक्सेशन होती, और फिर सेपरेट टैक्सेशन में इसकी इनकम तो नॉर्मल टैक्स में जाती, इसकी एक्सपोर्टर वाली इनकम मिनिमम टैक्स में जाती, बाकी इनकम नॉर्मल टैक्स में जाती, और बाकी ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नेशनल फैब्रिक लिमिटेड के बारे में बताया नहीं है कि ये क्या करता है, तो हमारी कॉर्पोरेट इनकम अकॉर्डिंगली नॉर्मल टैक्स में टैक्स होती है, कुछ एफटीआरएस एमटीआर के बारे में बताएंगे। तो 6 मार्क्स में ये सारी बात बतानी है कि ग्रुप टैक्सेशन नहीं होगी तो तीनों कंपनी की सेपरेट टैक्सेशन होगी, जेल की एनटीआर, एटीपीएल की ये वाली एनटीआर और एनएफएल की अकॉर्डिंगली एनटीआर इनकम टैक्स होगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है जो कि हमारे पास सजेस्ट आंसर या फिर प्रैक्टिस के अंदर दिया हुआ है, हम इसे भी रीड करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वन फिस्कल यूनिट, और फिर हम पार्ट बी का सॉल्यूशन देखेंगे, इफ द ग्रुप डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड एज वन फिस्कल यूनिट। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर इसने क्या करा कि पहले इसने ग्रुप टैक्सेशन के हवाले से और टैक्सेशन के हवाले से जनरल बातें की हैं, यानी ओवरऑल बातें की, ग्रुप टैक्सेशन कैसे नहीं हो सकता, क्या कंडीशंस वगैरह है, तीनों कंपनीज की इनकम की टैक्सेशन की बात की है, और फिर जो 3 पॉइंट्स बताए थे हमें सवाल में, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इनके ऊपर इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2 पे और पॉइंट नंबर 3 पे अलग-अलग कमेंट्स प्रोवाइड किए, और फिर पार्ट बी रीड करते हैं सॉल्यूशन, हम ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ग्रुप टैक्सेशन के लिए क्या कह रहा है, The option of taxation as one fiscal unit is incorrectly applied. Holding and subsidiary companies of a 100% wholly owned group may opt to be taxed as one fiscal unit. This condition is met in case of ZEL and ATPL only. कह रहे हैं यहाँ पर जो आपने तीनों कंपनीज को मिलाकर वन फिस्कल यूनिट ग्रुप टैक्सेशन की है ये गलत है। ग्रुप टैक्सेशन के लिए होल्डिंग और पैरेंट कंपनी का, होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का होली ओन ग्रुप होना चाहिए, तो ZEL और ATPL की तो ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है, एनएफएल की ग्रुप टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो ये दोनों बातें जनरल लिखी हैं कि ZEL and ATPL have to file an irrevocable option to be taxed as one fiscal unit. In this regard, consolidated group accounts are prepared for the computation of income and tax liability. This option of group taxation shall be available provided that the group companies comply with such corporate governance requirements and the group designation rules of regulation as the case may be specified by SEC from time to time and are designated as companies entitled to avail group taxation. तो ये सारी बातें इन्होंने जो भी सेक्शन में 59AA था वहां से रिप्रोड्यूस कर दिया। अब ZEL की बात करते हैं, ट्रीटिंग द entire income of ZEL subject to NTR is correct, ZEL की इनकम नॉर्मल टैक्स में टैक्स बिल्कुल सही है। ATPL के बारे में कहता है कि रेंडिंग ऑफ स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज टू एक्सपोर्टर आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 153 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, consequently tax deducted at 1% by direct exporter at the time of making payment shall be minimum tax. Regarding its sales to local seller, its income shall be taxable on NTR basis. तो ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। और एनएफएल के बारे में कहता है कि दिस इनकम मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली क्योंकि ये ग्रुप टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएगा, एंड इट्स एंटायर इनकम शैल बी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिजीम। ठीक हो क्या? तो पहले इन्होंने ओवरऑल कंपनीज की टैक्सेशन पे बात कर दी कि कहां ग्रुप टैक्सेशन अप्लाई होगी, कहां ग्रुप टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगी, और एनएफएल की इनकम को कैसे टैक्स होना है। अब सवाल में जो 3 पॉइंट्स दिए थे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पॉइंट था, ठीक है, हो सकता है जब आप ये सवाल देख रहे हो या ये सॉल्यूशन मेरा देख रहे हो तो आपके ध्यान में कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो ये चीज हमें एग्जाम हमें अपने कोर्स में कवर नहीं करवाई थी और ये एग्जाम में आ गई। तो देखिए ये बात डे 1 से मल्टीपल टाइम्स मैंने ग्रुप पे लेक्चर्स में ग्रुप पे या जब हमारी डिस्कशन होती है मैं बात करता हूं कि देखें सीफे 5 के कोर्स के अंदर चीजें इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा फैली हुई है कि 100% का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इस चीज की तो मैं कभी गारंटी नहीं दे सकता, इवन फाइनल लेवल पे कोई भी टीचर नहीं दे सकता, लेकिन इतनी तैयारी आपकी जरूर करवाई गई है कि आप आसानी से पेपर को पास कर सको, 80-85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आसानी से एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सको। तो अगर हमें एक हिस्सा नहीं भी पता जिसके अंदर अगेन शायद कॉमन सेंस से कुछ बातें लिख सकते थे या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सर्च करके थोड़ी बात लिख सकते थे, लेकिन अगर चले ये हिस्सा नहीं लिखा ना तो भी आसानी के 18% जीरो आ जाएगा, तो भी सवाल के अंदर इतनी जाने के 18 में से 10 11 12 मार्क्स उठा सकते थे, बाकी हिस्सा सवाल का आसान है। लेकिन जो चीज थी वो मैंने आपको क्लियर बताने की कोशिश की। कहता है जी सिंस एनएफएल इज एन एसोसिएट ऑफ ZEL, अब यहाँ पे एसोसिएट अकाउंटिंग वाला एसोसिएट नहीं, अकाउंटिंग में तो हम एसोसिएट को कहते हैं जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, टैक्स लॉ रिलेटेड पार्टी के लिए एसोसिएट का इस्तेमाल करता है, जो भी रिलेटेड पार्टी है वो सब्सिडी हो या एसोसिएट हो, एसोसिएट बन जाता है। सिंस एनएफएल इज एन एसोसिएट ऑफ ZEL, द आर्म लेंथ स्टैंडर्ड विल बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द सेल्स इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद द एनएफएल। In this case, arm length price will be determined for silk fabric purchased from NFL using the resale price method as follow. The resale price method assess whether the amount charged in controlled transaction align with the arm length result by comparing it to the resale gross margin realized in the comparable uncontrolled transaction. ये इन्होंने इनकम टैक्स रूल से उठा के जो रिटेल प्राइस मेथड मैंने आपको रेफर किया था वहीं से उठा के लिख दिया कि रिसेल प्राइस मेथड कहते हैं किसको है। कहता है स्टार्टिंग विद द resale price per roll is 470, हमने सेलिंग प्राइस ली 470. The following deductions will be made to arrive at the IPL. First, normal gross profit margin of 94,000 at the rate of 20% of the retail price will be subtracted. तो 94,000 20% के हिसाब से मार्जिन माइनस किया. Then expenses connected with the purchase that is paid in cartage of 3,000 per roll will be deducted. फिर 3,000 की other cost माइनस की. Finally, a quantity discount allowed by NFL of ₹1,000 will also be subtracted. 1,000 रुपए का quantity discount माइनस किया. तो फिर cost कितनी आ गई 372. After the above deduction, APL per roll of the silk fabric will be of 372,000. However, ZEL actually paid a higher price of 4,15,000 per roll to ATPL, resulting in an excess payment of 43,000. अच्छा 43,000 कैसे बना, हमारे पास 45,000 बना था. अच्छा मैंने इस 4,17,000 से 3 बातें मैंने कर दिया था, एनएफएल ने तो हमें 4,15,000 चार्ज किया, तो 4,15,000 और 3 बातें करके 43,000. तो 43,000 पर रोल में ज्यादा चार्ज किया गया, यानी कि टोटली 1.72 बिलियन में ज्यादा चार्ज किया गया, 1.72 बिलियन ज्यादा चार्ज किया गया.
As a result, 1.72 will be added in the ZEL income before tax as ZEL income was understated by this amount. तो again मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बिल्कुल एक्यूरेट बातें हम अपनी कॉमन सेंस से लिख देंगे, कुछ हद तक हम कॉमन सेंस से लिख सकते हैं कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन है तो ऑनलाइन बेसिस पे होनी चाहिए। अगर एग्जाम के में इतना टाइम मिल जाता है कि रूल वगैरह में ढूंढ कर कुछ कैलकुलेट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये जिसमें ऑल वगैरह आप छोड़ भी देते हो ना तो भी पेपर आपका ऐसा नहीं कि फेल ही होना है, 18 में से 0 मिले तो भी 18 में से इन दो एडजस्टमेंट्स की बातें, ये सारी बातें वही जो हमने करिकुलम के अंदर कवर करते हैं, 18 में से 10 11 12 मार्क्स आप फिर भी हासिल कर सकते थे या कर सकते हो आने वाले वक्त में। एनीवे, अब आते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Treating the entire amount related to the product development as allowable in tax year 2020 में सब्जेक्ट प्रैक्टिस के आंसर रीड कर रहा हूं, इसलिए 26 लिखा हुआ है, तो सवाल हमने टैक्स ईयर 2025 पर रीड किया। यानी treating the entire amount as expense is not correct, rather following treatment will be followed। सबसे पहले हमारे पास ये जो feasibility और प्रोटोटाइप का खर्चा था 5 million incurred before board approval represents pre-committed expenditure and should be capitalized and amortized by 20% annually। फिर हमारे पास रेनोवेशन का खर्चा था, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, डेप्रिशिएट होगा। 17 million spent on renovation is capital in nature as the entire renovated area is used for business purpose, 60% for R&D and 40% for marketing। Depreciation at 10% is allowable for the renovation expenditure। फिर मशीन परचेज की ये भी डेप्रिशिएट होगी, रुपीस 14 million spent on machine is capitalized, is depreciable asset accordingly, an initial allowance of 25% and depreciation at 10% allowable in tax year 2025 and onwards। Then सैलरीज वगैरह का एक्सपेंस किया, ये तो मेरा ख्याल सही होगा। रुपीस 9 million spent on engineer salary liability consumer related to, अच्छा सॉरी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की बात है जो मैं टेक्निकल पाया था कि जो इंजीनियर को सैलरी वगैरह दी है ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है और ये अलाउ हो जाएगा एज इट इज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में कवर होता है। और फिर लास्ट में हमने ये पेटेंट खरीदा था, ये इंटेंजिबल अमोर्टाइज होगा। रुपीस 4 million spent on obtaining the patent relates to intangible asset must be capitalized with the amortization to begin once the patent is available for use। अवेलेबल फॉर यूज जाएगा तो इसमें amortization स्टार्ट हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट में हमारे पास वो डिस्पोजल ऑफ एसेट बिटवीन होली ओन कंपनीज था, कहता है the gain of 8 million should not be recognized in the ETPL tax computation due to the following reason। ZEL and ETPL both are resident companies and are part of wholly owned group। ETPL यानी कि transfer income is not exempt from tax। ETPL ने ZEL को बेचा ना, ETPL ने ZEL को बेचा और ट्रांसफर की इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए ना, तो ये मेरे ख्याल सोल्यूशन गलत है। यहाँ पे ETPL नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ZEL होना चाहिए था। ETPL ने ZEL को बेचा है और ट्रांसफर की इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो ये ETPL इज नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ZEL इज नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ट्रांसफर की बात होती है सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन में ट्रांसफर की बात होती है कि ट्रांसफर की इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और उसकी रीजनिंग भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने सेक्शन 97 में आपको बताया था कि क्यों ट्रांसफर की इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी सोल्यूशन के अंदर कहां चला गया, सोल्यूशन के अंदर मतलब एरर ये ETPL होना चाहिए, ZEL इज नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Office premises continues to be used by the business operation of ZEL, the related liability that is bank loan has to be assumed by ZEL। ZEL will claim depreciation at 10% on the WDV of 25 million। थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, ये न्यू है। ZEL will claim depreciation at the rate of 25% based on the WDV of rupees 25 million, 25 के WDV पे ये 10% depreciation claim करेगा। तो ये सवाल का पार्ट ए था। अब आते हैं जी पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या था सर, अगर ग्रुप टैक्सेशन ना होती तो क्या होता। Since group taxation is one fiscal unit is not up to 4, all companies will be subject to tax separately। ZEL की इनकम तो 29% कॉर्पोरेट पे टैक्स होगी, ATPL की स्टेचिंग और एम्ब्रॉयडरी वाली इनकम मिनिमम टैक्स रेजिम में टैक्स होगी, बाकी जो इनकम है वो हमारी नॉर्मल टैक्स रेजिम में टैक्स होगी। लेकिन यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रूल अप्लाई हो रहा है, जबरदस्त। ये भी हमने नहीं किया था सोल्यूशन डिस्कस करते हुए कि अगर आप इसका रेवेन्यू देखें, अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो ये 210 मिलियन है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर रेवेन्यू 250 मिलियन से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर टर्नओवर 250 मिलियन से कम हो तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बन जाता है। फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में भी दो बातें हैं कि दो तरह की एसएमई होती है, एसएमई 1 एसएमई 2। सर ये कौन सी बात है, ये बात हमने कवर की थी मेरे ख्याल 10 शेड्यूल नहीं 12 शेड्यूल था, या कौन सा था, सॉरी 14 शेड्यूल था। 14 शेड्यूल में हमारे पास दो तरह की एसएमई होती है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में वो एसएमई आती है जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से कम हो, कैटेगरी 2 में वो एसएमई आती है जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा लेकिन 80 मिलियन से कम हो। अगर ये नेट इनकम टैक्स देते तो 7.5% या 15% टैक्स देना होता है, और अगर टर्नओवर बेसिस पे फाइनल टैक्स देते तो 0.25% या 0.5% का टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर इसका 210 मिलियन का रेवेन्यू है, यानी ये कैटेगरी 2 की एसएमई है, और कैटेगरी 2 की अगर एसएमई है तो या तो नेट इनकम का 15% टैक्स दे दे या फिर टर्नओवर का 0.5% फाइनल टैक्स दे दे। ये बात यहाँ लिखी होगी। ATPL small and medium enterprise being manufacturer and turnover of less than 250 million when with the assumption that it is registered with FBR on IRS portal will now have the following option। It can opt for taxation under final tax, the rate of tax will be 0.5% of gross turnover। This FTR option shall be exercised at the time of filing and shall be irrevocable for 3 years। If it, ये सारी बातें हमने 14 शेड्यूल में कवर की। If it does not opt for the final taxation, it will be taxable under normal tax regime at 15%। या तो नेट इनकम का 15% या फिर टर्नओवर का 0.5%। कैटेगरी 2 एसएमई की टैक्सेशन है। नो एक्सपेंस शैल बी अलाउड अगेंस्ट FTR व्हाइल एक्सपेंस शैल बी अलाउड अगेंस्ट NTR और MTR इनकम, और जिस भी तरह से हम टैक्सेशन करवाएंगे उसमें एक्सपेंस की अलाउडिटी डिसअलाउडिटी की बात होगी। NFL की जो इनकम है वो हमारी नॉर्मल टैक्स regime ही चार्जेबल टू टैक्स हो रही है। ठीक, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव तगड़ा सवाल था 24 मार्क्स की वेटेज का। मैं समझता हूं कि चलिए ये वाला पार्ट छोड़कर भी आप इस सवाल के अंदर 24 में से पासिंग मार्क्स 12 13 14 मार्क्स सिक्योर कर ही सकते थे। एनीवे आई होप कि सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि आप Holy shit man, this was so much। What was that? आशोक फितनों से भरी हुई है। ख्याल करना अपना और अपने आप को इस काबिल कर देना कि खुदा तुम्हारा खरीदार बन जाए। So what if a minute was already